friends, hello, I am Anup sir. Today we are going to continue our chapter number 9, reproduction in animals. In the previous lecture we studied about the types of the reproduction. Generally there are two types of the reproduction, sexual reproduction and asexual reproduction, and the female reproductive organs and the male reproductive organs. Now today we are going to discuss about the fertilization. The first step in the process of the reproduction is the fusion of the sperm एंड एन ओवम. तो रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या है कि फ्यूजन होता है स्पर्म एंड ओवम का. स्पर्म किस में होता है? मेल में होता है, और ओवम किस में होता है? फीमेल में होता है. जो स्पर्म होता है वो टेस्टिस ग्लैंड्स में से प्रोड्यूस होता है. ओवम जो होता है ओवरी ग्लैंड्स में से प्रोड्यूस होता है. When sperm come in the contact with an egg, sperm जो egg के साथ contact में आता है, one of the sperm may fuse with the egg. Such fusion of the egg and the sperm is called the fertilization. Which is called the fertilization? तो क्या होगा? The fusion of the sperm and egg is called the fertilization. During the fertilization, the nuclei of the sperms and the eggs fuse to form the single nucleus. This result in the formation of a fertilized egg are called the zygote. जो fertilized egg होता है जो किसके स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से बनता है उसे क्या कहते हैं? जाइगोटे कहते हैं. इट इज कॉल्ड द जाइगोटे. Zygote is the fertilized egg. Okay. Now we have to see here. Here it is the sperm and it is the ovum, and then it is a fertilized egg. It is called the zygote. It is called the zygote. Do you know that the zygote is the beginning of a new individual? Beginning of the new individual. Zygote is the beginning of the new individual. We have to see here the process of the zygote. The process of the fertilization is the meeting of an egg cells from the mother. मैंने बोला ना मदर से क्या आता है? एग सेल्स आता है. एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर. फादर से क्या आता है? स्पर्म सेल आता है, क्योंकि जो टेस्टिस ग्लैंड्स होती है मेल में होती है और स्पर्म को प्रोड्यूस करती है, और जो ओवरी ग्लैंड होती है फीमेल में होती है ओवम को प्रोड्यूस करती है. सो इन द फर्टिलाइजेशन द एग सेल फ्रॉम द मदर एंड द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर. सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर. जो न्यू इंडिविजुअल्स जो बोर्न बेबी होता है, ठीक है, उसके अंदर सम कैरेक्टरिस्टिक मदर की होती है और सम फादर की होती है बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स. लुक एट योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर एंड योर फादर. फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. जो फर्टिलाइज होता है फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, काउ, डॉग्स एंड द हैंस. जो काउ, डॉग, हैंस इन सब में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. विच इज कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन? द फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी. The fertilization takes place inside the female body is called the internal fertilization. Internal fertilization occur many animals including humans, cows, dogs and the hens. You will surprised to know that
In many animals, fertilization takes place outside of the body of the female. बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडीज करते हैं. फर्टिलाइजेशन टेक्स फ्रॉम द प्लेस इन वाटर. इन आउट हाउ इट हैपन्स, कैसे हो सकता है ये, वी हैव टू सी हियर. ड्यूरिंग द स्प्रिंग और रेनी सीजन, during the springs or rainy season, frog and toads moves to the pond and slow flowing streams. When the male and the female come together in water, the female laying hundreds of eggs. Unlike hen eggs, frog's eggs is not covered by cells, and it is the comparatively very delicate. A layer of jelly holds the eggs together and provide the protection of the eggs. Okay, जो फ्रॉग होता है वो क्या करता है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन करता है. As the eggs are laid, the male deposits the sperm on them. जो फीमेल होता है वो क्या करता है, एग्स को रिलीज करता है, और जो मेल होता है स्पर्म क्या करता है, उस पर डिपॉजिट करता है. Each sperm swims the randomly in water with the help of the long tail. ओके, तो ये वाटर के अंदर रिप्रोडक्शन करता है. कौन करता है, फ्रॉग. The sperms come to the contact with the eggs. This result the fertilization. This type of the fertilization in which the fusion of the male and female gametes take place outside of the body is called the external fertilization. Which is called the external fertilization? The if the fertilized outside of the female body is called the external fertilization. Female gametes take place outside of the body is called the external fertilization. It is very common in aquatic animals such as the fish, starfish, frog. ठीक है, जितने भी ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं. जैसे और जो ह्यूमन है, हैन है, काऊ है, बफेलो है, गोट है, ये सारे क्या करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं. टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द fertilization, which is called the fertilization, which is called the zygote, which is called the fertilized egg. How many types of the fertilization? There are two types of the fertilization, internal fertilization and external fertilization. If anyone have any query regarding the fertilization, then ask me in comment box. In the next lecture we discuss about the development of the embryo. Have a nice day.